as usual, before we start answering questions from you guys, let me just tell you what I'm thinking will happen in the next coming week. तो अभी जैसे पिछले हफ्ते हमने सोचा था कि ये डाउनटर्न की शुरुआत है एंड मोस्ट प्रोबेबली विल प्रोबेबली सी ए न्यू लो एंड विथ दैट सेम थॉट प्रोसेस इन प्लेस दिस वीक आल्सो इज अ रेड कैंडल. अभी for the next coming week is a decider according to me. It will confirm whether this uptrend that we have been seeing for the past 2 months is done or this is just a bull trap or bear trap, sorry, so that we can further accumulate shorts and eventually will go up. Now, this week's eventual move is decided by the three results that have come in. Uh, basically what I was saying is ये जो week का move अभी है तीन कैंडल जब भी होते हैं एंड दैट टू सो स्मॉल कैंडल्स ऑन वीकली द फोर्थ कैंडल इज यूजुअली अ बिग वन. आप प्रीवियसली जाके कहीं पे भी देख लो. आई मीन इफ देयर इज एनी डायरेक्शन, इफ एनी if at all there is any move in one direction, that too very slowly, then the fourth candle either it be daily or weekly or monthly will be a big one. तो वो हिसाब से what I am thinking will happen is either a candle like this testing 24,500 or there will be a bullish reversal. Like initially because of results we might open gap down and then we can have a green candle like this. Now this movement is decided by the three results which have come yesterday and day before: Reliance, ICICI and HDFC. Reliance results are bad, no doubt. HDFC is also bad. But HDFC, what it has done is it has announced bonus shares and a special dividend of 5 rupees to mask their results. ICICI is a beat on all parameters. So Bank Nifty will be balanced by the rise in ICICI and a fall in HDFC is what I am thinking. So Bank Nifty might not move too much, but the problem is with Reliance results. Apart from their Geo arm, everything else is bad. Like their O2C was down, their EBITDA is down by 2%, revenue is down by 7%. What saved them is their stake sale in Asian Paints. They had sold Asian Paint shares worth 8,000 crore or something like that. So because of that, the profit overall for the previous quarter is being shown as a high value, but it is not like that. I mean, it's actually a bad result. So there might be a possibility that we might open gap down tomorrow. Now that again is a problem. If we see in daily, we closed at 24,968. And even if we open a gap down of, let's say, 20, 40, sorry, 140 or 150 points, we'll open at this support. So in the eventuality that we open here near 24,800, market will try to bounce first. Let's say we open somewhere close to this. Now what we can do in that case is if it bounces, we'll have to wait for it to reverse to again go short till these levels for the entire week. Or if at all it is bouncing and making two 15-minute candles in a short range sideways, then it will eventually go up. It was just a bear trap, and then it will eventually go up and visit these levels. So this week will be a deciding factor according to me whether the market wants to continuously go down or it wants to go up. Now, apart from chart, if we see, Sir, can you yeah, repeat the going up scenario? I understood the going down. okay. So going Yeah. up, what will happen is if at all it wants to capture in more shorts, what will happen tomorrow is we'll open gap down, probably at this particular range, 24,800 or 750 to 800 range. Once that happens, whatever is the nature of the first 15-minute candles will determine the market. Let's say the first 15 minutes candle is a green, continuous green, strong one, then it is done and decided that market will not fall, it will go eventually up. But let's say the first 15-minute candle goes up, comes down, and sort of forms a bearish hammer. Then the entire week will be again bearish, and we will eventually test 24,500 or even break it. So those are the two scenarios that I see for the coming week. What happens on Monday will decide what will happen throughout the entire week. That is for sure. Why I am saying that is, let's come to option chain, and then we can see FII, DII data, futures and options. Now, if you see futures and options, this is the futures OI that FIS have been maintaining. They are 1.5 lakh lots short in futures. This only happens when they know something and we don't know something. Like when retail doesn't know and we think market is going to go up and this sort of data comes around,
it's usually a turnaround time that FIS have made up their mind that they will keep on selling in Indian market. Now, why that is the case, that might be attributed to the results that have come out over the weekend or the trade deal which is not getting closed at all. I mean, 90 days ago, trade deal closed nahi hua hai. Even our commerce ministry and 4 or 5 officials have gone the last week to the US saying we'll close the trade deal in 4 or 5 days. वो भी नहीं हुआ है. So both sides it is negative. And the other thing is market अभी बहुत shallow है. जब से Jane Street गया है कोई volume नहीं है कुछ नहीं है. I think you guys might have seen it on news also that my volumes are down roughly 40% from the last 4 months high. So all this put together, if we see, if at all market decides to fall, it will fall very quickly. That is for sure. तो अभी हमको क्या करना है for the next week is wait for a confirmation of our theory. Like अगर हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, अगर फ्लैट खुलता है और इसको क्रॉस होता है, then there is no need of confirmation. It is going to fall. That is the best scenario which can happen. Similar to what happened on Friday. Like we open somewhere here, the first 10-15 minutes it will break this low. Then we are just going to take the opening price as our stop loss and wait for a big move. The second scenario is gap down because results are bad. If it is gap down, then we'll wait for the first 15-20 minutes. Again, gap down best scenario would be open here, go like this, and then fall. Then we may aggressive traders can trade here, or conservative guys like me can trade here when it is breaking its low. If it wants to go up, it will gap down and keep on going up. So these are the only three scenarios that I see. Now with that, what I was showing is OI. So this is futures short. Cash में भी short ही चल रहा है कब से. On Friday they bought 375 crore. This is again against the market trend. I thought seeing market fall aggressively on Friday, I thought they would have sold, but surprisingly they bought 375 crores, but they sold in futures about 2,400 crores. So overall they are expecting a fall, but this figure might aggravate on Monday. So we'll see. Monday is a deciding day for me for the entire week and the uptrend that we are seeing now. That being said, we will come to the questions now. अभी ग्रुप में मनीष साहब ने तो 4 क्वेश्चन डाले थे, so I'll first go through them and then if at all somebody else wants to ask me something, then we'll take it accordingly. Now, for the first question, Manish Bhai asked. Okay, so Manish Bhai asked the trade logic that we had for Friday. So Manish Bhai, आप हो ना call में? You are there in call, right? Yes, sir, I'm here. Okay. So Friday, this why I said like if it breaks previous day's low in the first 5 to 10 minutes, we'll go short is there was a clear pattern. This pattern. So it made a flag like this, although a small pole and a flag. And this was breakdown of flag. That is why we traded whenever it will break the 5 minutes. Sorry, the previous day's low will trade, and then we took that trade. But personally, I did not trade at the break of previous low. I waited for the swing. I entered somewhere close to here because my stop loss is only this many points. So I entered 25.70, keeping a stop loss of 25, 15 point stop loss, and then I waited throughout the day. As I posted, I exited after this candle when it confirmed it is not going to go down. So somewhere here I exited. That was the logic of the Friday's trade. And आपने पूछा था strike and hedge what I selected. So this is the strike and hedge that I took. Now, why 24,800 is because I was expecting a move till 50 EMA, which is 24,940, 950-ish levels. So to capture that 100 and something odd point move, 24,950, 24,800 was well within the money. डिस्टर्बेंस आ रहा है मनीष जी आप म्यूट कर सकते हो whenever आप क्वेश्चन पूछोगे. Okay, again coming to that. So I selected 24,800 because I was expecting the move to somewhere end here, 24,900, 940, and I didn't want to carry forward because three of the big companies were coming out with the results over the weekend. That is why the
main strike that I selected was 24,800. And as I told you previously, whenever I select a strike, my hedge is always in the zone of 20 to 30 rupees premium. And at the beginning of the day, when I made this basket, even during the trading time, 25,500 was trading close to 24, 25 rupees. So I took this 25,500 edge. That is the only reason. That one. And after next question, tha, how can I log in Sensible? So basically, if you have an account in Zerodha, and if you have created a basket like this, you can just push analyze here. That will give you a pop-up from Sensible itself. So this is a Sensible pop-up. Now here, if you see, you will see builder for free on the rightmost corner of this particular window. आप उसको press करोगे, it will take you to Sensible. Here, once you come to analyze and see option chain, you can go to option chain. अगर आपको FIDA absolute, if you want to see the FIDA data for the previous days or for the previous months, you can go here. That is how you go to Sensible. Otherwise, if you don't want to go all that, then just save this particular link once you open, and then from the next time onwards, you can just bookmark and enter Sensible through this particular link itself. That was your second question. And you asked whether I create a basket in Sensible. I don't create a basket in Sensible per se. I create baskets in Zerodha only. You have that facility here in Zerodha itself. And the next thing is you asked data reading of FIA. Now, once you come to Sensible, go to Analyze, go to FIDI data. It starts off as a default view like this. This shows you what happens the previous day. Like now, this entire screen that you are seeing is with reference to what happened on 18 July, which is Friday. So on Friday, if you see, index futures, they have shorted 1.5 lakhs. The net short is at 1.5 lakhs. And on Friday alone, they added 12,300 shorts in futures. Index options again, they sold calls and bought puts. So net, they are holding only 119 lots of calls and about almost 2 lakh lots of puts. So clearly bearish net. And even their action on Friday is also bearish. Similarly with prop desk, if you can see, and retail, if you can see, client means us retail. So this is how we study when it comes to futures and options. And if you want to see what happened in cash market, go here. They'll tell you how much they sold and all that. So on Friday, FIA bought 375, DA bought 2000 odd. That is how we read FIA DA data from Sensible. And आपका last question था on days when previous day high low is not broken, how do we trade? Usually all that is planned in the morning itself. Now let's say आज का plan ये हो गया कि if at all it opens flat and breaks Friday's low, we'll trade. Let's say it doesn't break Friday's low or it gaps down. So we already have a plan. If it gaps down, goes up and comes down on break of that particular first 5 or 50 minutes candle, we'll trade. Or if it keeps on going, we'll wait for this particular level to be broken on the upside to trade. So that is how I decide. And let's say if it is in consolidation, I usually avoid trades. These candles here, if you see, this candle is right in the middle of this big candle and this one. So during these days, I sort of try to avoid. Whenever there is a clear pattern on daily time frame, I take directional moves. Previously, I used to do a lot of scalping, but this year onwards, I have tried to reduce it because of higher brokerages and STT and all that. So last week, I only had two trades. One is that one on the Friday, and the other one which I shared a scalp on Thursday or Wednesday. I don't remember that swing wala. I think it was Wednesday, I think. So only those two trades. That answers all of your questions, Manish bhai. If at all you have something else. So these were only the four questions that I got on the group. If somebody has something else to ask, please unmute and ask. So I'd like to ask. Yeah, So what I meant with regards to the last question was yeah. on days when as per your YouTube video in which you say that in the first 5 minutes, if the high or the low is broken, we enter. But on days when this does not happen, Hmm. then
how do we trade? Do we not trade at all? Manish bhai, that podcast that I had given to Vijay Thakkar, I mean, it was one of those strategies. It is not my only strategy. I think he edited that part out where I said this is one of the biggest strategy I make money with, but it is not the only strategy I make money with. So that part he edited, and everybody started thinking I only use that. No, I most of the times I earn with that, but that is not the only strategy. Now let's say your question, when it is not going to break previous day high or low, I usually don't trade right nowadays. Previously I used to scalp, now no. If at all there is any compelling move that I see, then only I'll trade. Otherwise, no. If I see any reversal or if I see continuation of some momentum that I started, then only I'll trade. Otherwise, no. Right. Thank you, sir. Yeah. गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening, Himanshu bhai. बोलिए. बिटकॉइन तो देखो सर, क्या करना है बिटकॉइन का, 1 घंटे का चार्ट देख के घबराहट होने लग जाती है। निफ्टी की आदत पड़ी हुई है ना 5 मिनट का चार्ट देखने की। नहीं नहीं, बिटकॉइन अभी साइडवेज मोड है. बिटकॉइन आप छोड़ दो अभी. Till the time Ethereum doesn't come to its all-time high, Bitcoin is not going to move. Bitcoin wants to go down, but Ethereum is not letting it go down. तो या तो निफ्टी की सर इतनी आदत पड़ गई है 9 से 6 बैठने की, इसका थोड़ा वो रात को मूव करता है, पता नहीं कैसे अडेप्ट होगा। ये वाला move I actually sort of wanted to tell everybody and take, but when this move happened, I was in Nifty straight, so I completely ignored this. This was a very easy move to capture. Like if you go to hourly, this particular move, it was somewhere like this. So this is clearly a breakdown pattern, and it sort of broke out and then came down again. So this was a very easy move to catch. After that, there has no, I mean, there has not come any trade. तो जब भी दिखता है, I'll put it on the group. बिटकॉइन में ट्रेड्स पकड़ना इजी है compared to निफ्टी एंड बैंक. What I have observed so far for the last 1.5 2 months, Bitcoin and Ethereum, it's very easy to trade. Abhi the problem is Ethereum is not going to stop till it reaches all-time high. So when it reaches all-time high, कल परसों में हो जाएगा, then we can short both Bitcoin and Ethereum both. क्योंकि Ethereum बहुत नीचे से नॉन स्टॉप ऊपर आ रहा है. So we'll just wait. और बैंक निफ्टी कह रहे हैं सर कि वापस लेके आओ, क्या लगता है आएगा? बैंक निफ्टी हाई नहीं लगेगा. बैंक निफ्टी HDFC ICICI के रिजल्ट्स खराब है. ICICI is still good, but HDFC के तो खराब है. नहीं, उसकी वीकली एक्सपायरी नहीं कह रहे थे वो ब्रोकर सेबी की मीटिंग के साथ वो? नहीं, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी नहीं करने वाले वो लोग. अब सेबी कह रहा था कि निफ्टी भी दे विल डू फोर्टनाइटली एक्सपायरी, व्हिच ब्रोकर सेड कंसीडर वी डोंट वांट फोर्टनाइटली, वी वांट ओनली वीकली. अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज उन्होंने जो सजेशंस दिए टू सेबी, 2 or 3 suggestions in them said they want SEBI to bring out an eligibility criteria. तो बेसिकली वो क्राइटेरिया ये होने वाला है कि अगर आप लगातार लॉस कर रहे हो, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड. So खत्म हो जाएगा मार्केट। that is one of the criteria. And then they want an क्या बोलते हैं उसको, they want an undertaking from retailers saying we have that much money to lose, हमारा प्रोफाइल ऐसा है, हमको पता है, वगैरह वगैरह वो सब है. अभी you see this bank nifty chart, last week also we drew this, I think if I remember, in our month मतलब forecast वाला वीडियो में. It now has clearly broken this क्या बोलते हैं राइजिंग वेज. क्लियर शॉर्टिंग कैंडिडेट. यहां तक तो पक्का ही है. आई थिंक गैप डाउन में खुल जाए कल या परसों में. So whoever is trading bank nifty can try to capture this. We can easily see levels of this one, 55,600 or 55,500. Clear breakdown है तो. आप लोग में से कोई करता है बैंक निफ्टी और एवरीबडी इज ऑन टू निफ्टी ऑन? यस सर, मैं करता हूँ. मैं पोजीशनल लेता हूँ. मैं Okay. मंथली पोजीशनल लेता हूँ सर. अभी मैं बैठा हुआ हूँ शॉर्ट में ही. 57,500 का आईटीएम है और राइट नाउ मैं उसमें बैठा हुआ हूँ. 4-5 दिन पहले मैंने ले लिया था शॉर्ट. बढ़िया मुझे है. लग रहा था कि या बढ़िया. इस बार आपने आईटीएम लिया है क्या? लास्ट टाइम अगर आप मेरे ख्याल यस से सर, आपने मैंने ओटीएम लिया था. ओटीएम लिया था और लास्ट टाइम उससे पहले भी मैंने ओटीएम लिया था. उसमें मुझे काफी बढ़िया मिला था. मैंने बताया था आपको 10,200 मतलब 50K 57K में बना लिया था. या फिर मैंने आपकी लॉजिक को भी
समझा तो फिर मुझे लगा आईटीएम लेना जरा बेटर है। हाँ, थोड़ा या कैपिटल ज्यादा रहता है, लेकिन मैंने राउंड लेवल पे जब आईटीएम लेता हूँ तो जो लॉसेस मुझे कम मिलते हैं ऑलमोस्ट, और जो प्रॉफिट होता है जब बढ़ता है तो फिर मुझे विक्स ये सारे यस मेरे हेल्प करते हैं। एक ऑलमोस्ट यस फ्यूचर की तरह काम करता है वो। यस यस यस, अभी तो आपका तो फ्यूचर ही हो गया। अगर आपने 57,500 में शॉर्ट किया तो दैट्स अ वेरी यस गुड सर। पुट टू होल्ड। मैं एक मिनट में देख लेता हूँ जरा मैंने कब लिया था। जस्ट अ सेकंड से मैं बता देता हूँ। 55,800 तो आपको कल ही दिख जाएगा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। और सर ये 9 जुलाई को लेकिन लिया था सर मैंने ये सर। और जो मेरा जो बाइंग प्राइस था मैंने 716 पे लिया था, ओके 716 रुपए। तो ओके, फिर मेरा जो टारगेट है वो है 1595 पर है सर, जो ऑलमोस्ट 130% है। अगर वो वहां तक पहुंच जाता है तो फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा वहां से। सुपर। लेकिन सर एटीएम ने बेचा कॉल या पुट, मार्केट ज्यादा गिरा या ज्यादा बढ़ा, लेकिन आपको ज्यादा फिर प्रॉफिट नहीं होता है ना, क्योंकि सम एट सम प्लेस रुकता है ना वो। नहीं नहीं सर, उन्होंने आईटीएम में खरीदा है, इन द मनी पे खरीदा है हाँ उन्होंने, ओके बेचा नहीं ओके, है। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, इट इज राइट ना? या क्योंकि एटीएम वंस देखो ना वंस 300 पॉइंट। एटीएम वंस इट क्रॉसेस योर स्ट्राइक देन इट विल डीके स्लोली। वो आपको फ्यूचर वाला फील नहीं हाँ आएगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत, नहीं नहीं, बहुत बहुत दिख स्लो हो जाता है सर। यस यस। अभी 25,000, 25,000 का पुट, वो 150 का 70 हो गया तो उधर ही रुका सर, 200 पॉइंट नीचे गया तो भी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने अभी कॉल बेचा है एंड देन मार्केट गिर रहा है, तो जब भी हम्म। मार्केट गिरता है एक तो विक्स स्पाइक करता है तो आपका डीके ऐसे ही खत्म हो जाता है। लाइक इट स्पाइक इन विक्स हाँ, विल नॉट अलाउ द ऑप्शन टू डीके दैट फास्ट, बिकॉज एक ऑप्शन डीके होना चाहता है and सिर्फ क्योंकि विक्स बढ़ रहा है इट विल टेंड टू पुश द ऑप्शन प्राइसेस अप, तो वो नेगेट हो जाता है एंड देन यू विल हार्डली सी एनी डीके। इसके लिए ज्यादा 200-300 पॉइंट एटीएम में इन द मनी में बेचना ही ठीक है ना? यस, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेल इन आईटीएम। अगर आप डायरेक्शनली खेल रहे हो तो ओटीएम में बेच के क्या फायदा है, डायरेक्शनल खेल रहे हो तो या तो आप हाँ, इन द मनी खरीद लो या फिर इन द मनी बेच दो। व्हेन विक्स इज हाई नहीं एंड लेकिन, देन आपको डायरेक्शनल पकड़ना है तो बेचना आसान है। नाउ इन दिस एनवायरनमेंट वेयर विक्स इज लो एंड यू वांट टू कैप्चर एनीथिंग डायरेक्शनल देन इट इज ऑलवेज बेटर टू बाई इंस्टेड ऑफ सेल, जैसा बरिष्ठा साहब ने किया अभी। यस यस, क्योंकि प्रीमियम में इतना है। या ऑल दैट सेड एंड डन, ये हफ्ता मजा आएगा, मोस्ट प्रोबेबली विल सी अ वेरी गुड वीक। And then if this month closes to be engulfing bearish, then to super. Then apna thesis is like 100% confirmed that it will further go down. This monthly candle is very aggressively bearish. Although daily में कुछ पकड़ने को नहीं मिल रहा है, but monthly candle is very aggressively bearish. If it closes somewhere here this month, 24,600, 500, next month we'll again see downtrend. I will have to wait and see how this fares. यस सर, मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए स्केलिंग के लिए। सो Yeah. मैं आपको बताता हूँ मेरा कैसे हुआ। Okay. सो बेसिकली हमारा पहले डिस्कशन हुआ था कि व्हेन यू हैव, लेट्स से यू हैव योर अकाउंट, यू हैव टू कीप लाइक 15 to 20% aside and use the rest of the funds for the margin, right? Yes. Yes. Using that. Yes. So I have used like in पिछले 2-3 हफ्ते में मैंने वो ट्राई किया। तो Okay. उसमें मेरा जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है वो 5400 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है। Okay. तो उसमें होता ऐसा है कि 20 पॉइंट्स का जो मेरे 2-3 स्टॉप लॉस, यानी 4-5 स्टॉप लॉस लग गए थे, तो उसमें Okay. एक स्टॉप लॉस जो है ना, वो 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो 1 लाख का हो जाता है। Okay. तो दैट्स इवन दो इट्स 1% स्टॉप लॉस, उसमें कैसा रहता है कि साइकोलॉजी थोड़ी हिल जाती है उसमें। So then again, in yesterday, last week's call, I guess, last week or last week's call, you mentioned someone for the beginner to sell one strike above the ATM price Yes. to start off, etc. Yes. तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मैं ये खुद के लिए, कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ पोजीशन साइज। सो मैं कैसे ये डिसाइड करूँ कि
आउटसाइड सेल करूं, एट द मनी सेल करूं या इन द मनी सेल करूं, एंड कैसे मैं डिसाइड करूं कि कौन सी पोजीशन साइज से चालू करूं, एंड देन आई कैन स्केल अप अ बिट. Sir, this happened to me when I started, when I moved to selling from buying, जैसा आप बोल रहे हो. तो my ओके, criteria was, जब तक position size I am not comfortable to hold for like a full day that we did on Friday, मैं वो size पे जाता ही नहीं हूँ. मेरा हमेशा बैरोमीटर यही रहा है कि आई वांट अ साइज विच आई कैन होल्ड कंफर्टेबली विदाउट एनी फ्राइट, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे हमको लगता है लॉस होने वाला है हम लोग निकल जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट करेक्ट, कंफर्टेबल विद द अमाउंट ऑफ लॉस दैट वी आर टेकिंग. राइट, राइट, हाँ हाँ, सो फॉर मी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई सॉर्ट ऑफ मेड आउट कि लगातार अगर 10 लॉस आप जैसे बोल रहे हो, लाइक 20 पॉइंट इज कन्वर्टिंग टू लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड इफ लेट्स से 10 ट्रेड गलत हो गए तो आपको 10 लाख चले जाएंगे. तो करेक्ट, प्रॉब्लम यही है, मतलब आप माइंड में यू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द फिगर दैट आई एम ओके टू लूज इवन इफ 10 ऑफ माय ट्रेड्स आर गोइंग रॉन्ग स्ट्रेट साइमल्टेनियसली. गॉट इट, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन साइज कर लो. आप लाइक लेट्स से आप ये सोच रहे हो कि इवन आफ्टर 10 ट्रेड्स गोइंग अगेंस्ट यू यू आर ओके टू लूज लेट्स से 5 लाख रुपीज. दैट मीन्स पर ट्रेड यू आर लूजिंग 50,000 डॉट. सो आप पोजीशन ऐसा कर लो कि 20-25 पॉइंट्स और वॉट एवर योर स्टॉप लॉस विल ओनली टेक अवे 50,000 पर ट्रेड फ्रॉम यू. गॉट इट, ओके, हाँ हाँ, ओके, सर सो मोस्टली मैंने जितना भी देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर whoever I have spoken with who is doing regular option selling or option trading per se, most of us don't make money because we don't have that innate capacity to hold trades for long. As and when we get that capacity to hold trades, winning trades particularly, we'll automatically start making money. That is the only, what do I say, strategy that we'll have to adopt. नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कैन प्लीज रिपीट दिस? तो मैं कह रहा हूँ we retailers always, or how do I put it? We hold trades which are loss making ones. We never hold trades which are profitable. ओके, So I'm saying till the time we don't learn how to hold profitable trades, we'll never make money. oh, okay, okay, or to hold we need to have little reduced size where I Yes, should feel comfortable. yes. ओके, तो मैं ये कैसे डिटरमाइन करूं कि मेरा होल्डिंग कैपेसिटी कितना है और कैसे है उसमें वही मैं कह अभी? रहा हूँ ना सर, like you decide how much is the loss that you are willing to take ओके, if you even lose 10 trades straight. ओके, तो उसके हिसाब से ठीक है, ठीक है, 10 उसके ट्रेड्स, हिसाब से. ओके, या आई विल कैलकुलेट दैट. And sir, एक ग्रेट, और like the market which has been in the last 1.5 months, 10 क्या मेरे हिसाब से तो जिसने बहुत लगातार ट्रेड किया उसको तो बहुत गलत ट्रेड्स गए होंगे, बिकॉज मार्केट वाज सच, बिकॉज नो वॉल्यूम, कहीं से भी पलट जाता करेक्ट, है, देयर इज नो कंटिन्यूएशन. बट नाउ वी आर गोइंग टू राइट, एंटर ए स्टेज वेयर मार्केट विल गिव अस अ डायरेक्शनल मूव. नाउ जितना मैंने देखा है मेरा पैसा उसी में बनता है, बाकी ये साइडवेज में मेरा कभी पैसा बनता नहीं है. तो बी रेडी टू कैप्चर द नेक्स्ट मूव विच इज गोइंग टू कम. इट विल कम दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर. ये वाला मूव जाने नहीं देना है कुछ भी हो जाए. ओह परफेक्ट, ओके, ठीक है, This will be a big move either way, up or down. So we'll have to capture this. गॉट इट. एंड इन द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं यूजुअली कितना स्ट्राइक प्राइस हम अंदर लेके छोड़ सकते हैं? 300 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, कैसे आप Sir, सिलेक्ट वो करते हो वो? ultimately आपके target पे depend करता है. Now, if you ask me, Friday I knew there was 50 EMA, so 100 points away from the target I took in the money. EMA was at 25, 24, 940 or some odd level, so 100 points away, 24, 800 I took. ओके, Now, next move, लेकिन as I'm saying, if it crosses this, I हाँ हाँ, expect a slight halt here, but eventually I'm seeing 24,500 very shortly. So, if at all I decide to take a directional move next time in the coming week or in the coming 2 days, I'll take a call which is below 24,500. Let's say 24,400 or 300 I will short, and I will hold it for गॉट like इट, 1 or 2 expiries because I am expecting a target till 24,500. Let's say you are expecting a target till 24,500 and you traded by selling call of 24,700. You are eventually going to lose 200 points, which has crossed your strike. करेक्ट, So my thought process in selecting the strike price of an option is that only till where it is going to move, and 100 points or 150 points below that, I am going to trade my strike. ओके, क्योंकि वो लास्ट में वो पूरा मूव देता नहीं, यानी देयर इज Exactly. ऑलवेज 100 to 200 पॉइंट्स वी हैव टू लेट इट गो.
यस, इसीलिए मैं वो नहीं मैं मतलब मुझे वो छोड़ना नहीं है। द प्रॉब्लम विद आर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, 10 में से 2 या 3 बार ही हम लोग डायरेक्शन मूव पकड़ पाते हैं, एंड वो 2 या 3 बार में भी अगर इफ यू लीव दैट लास्ट 100-150 पॉइंट्स एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द ट्रेड दैट यू गॉट फॉर द फुल एक्सटेंट। गॉट इट, गॉट इट। ओके ओके ओके। या मैं बाय डिफॉल्ट 300 पॉइंट्स इन द मनी का ले रहा था, सो आई नीड टू चेंज दैट वन। Yeah, ग्रेट, and थैंक्स। one other thing most of us retailers don't do is pyramiding. आप लोगों में से कोई करता है pyramiding? नहीं, वो कैसे आप करते हो? कैसे करना है वो? अभी तक तो नहीं, but from this month onwards I am planning to do pyramiding. Now, pyramiding आपको basic concept तो पता होगा. If you are in a trade which is going as per your expectations, you keep on increasing your lot sizes so that you get the maximum possible profit from that particular move. जैसे आपने समझ लो यहाँ से ही शॉर्ट कर दिया, तो what pyramiding says is, let's say you entered first short here, and then since it started going again, you are supposed to increase your quantity here again because your stop loss is so less, and you keep on doing that. Now again, if it goes from down, you are supposed to increase it here and put a stop loss here. That is what pyramiding says we'll have to do, but it takes a lot of guts and conviction to do it. या क्योंकि जो पुल बैक आता है ना, वो थोड़ा जाता रहता Exactly, है, राइट? exactly. सो आपने जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो बाय किए थे, आई थिंक लास्ट लास्ट वीक, Yeah. विद टोटल साइज ऑफ 36,000, तो Yeah. वो वाज इट अ पार्ट ऑफ पिरामिडिंग? No, that 36,000 I took at one shot because I was so convinced that 24,900 cross होते ही it will move. I took 36,000 one shot. ओह, ओके 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 ओके, गॉट इट। तो ये फिर पिरामिडिंग आप कैसे करने वाले हो अगले पिरामिडिंग 1-2 महीने में? पिरामिडिंग ओनली हैपेंस लाइक आप किसी मूव को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद सम ऑफ योर पोजीशन सो दैट यू वांट टू टेस्ट कि आपके डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं. वंस इट गिव्स यू कंफर्मेशन, यू ऐड फर्दर पोजीशंस टू इंक्रीज योर साइज. दैट इज पिरामिडिंग. जब आपका श्योर शॉट पता ही है तो आप पूरे क्वांटिटी से ही कूद सकते हो. ओके ओके। सो अगर अगर हमें अगर पिरामिडिंग करना है, तो पूरा अकाउंट तो इसमें लॉक हो जाता है ना? हाँ, वही एक तो तो है. बेसिकली पिरामिडिंग इज एन टेक्निक विच अलाउस यू टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स. ओके, इनिशियली कम कॉन्ट्रैक्ट से फिर अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार डायरेक्शन आपकी तरफ चला गया देन आई मीन जितना भी ये सब डाल दो वैसा टाइप. गॉट इट, गॉट इट। ओके, साउंड्स गुड, थैंक्स। सर स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर सकते हैं ना अपन? पहला जो किया वो कवर करो और फिर नीचे जाओ या ऊपर जाओ कुछ भी। यस यस. वो मीन्स जो ये बोले कि क्वांटिटी एक बार फिक्स हुआ ना तो हम्म. नहीं रहेगा, समझो तुम्हारे पास मार्जिन नहीं रहेगा तो यू कैन शिफ्ट दैट। लेकिन वो उतना सर ये अपन बातें करते आपके जैसे करते, इसको ना आराम पेशेंस है और कॉन्फिडेंस है ट्रेड में, वही कर सकता है ना सर। हाँ, वही मैं कह मार्केट रहा का हूँ सर. इमीडिएट तो भी 50 आप पॉइंट घूम जाता है तो लोग कौन सा नहीं कर सकेंगे ना। यस, तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि वो मतलब विनिंग ट्रेड्स को लंबा होल्ड करो. बस मैं वही कह रहा हूँ डे वन से. जिस दिन ये आ गया कि आपने विनिंग ट्रेड पूरा होल्ड किया, अभी फ्राइडे पता नहीं कितने लोगों ने होल्ड किया वो पूरा मूव, जो वैसा कर सके वैसा ट्रेड अगर 2 या 3 बार भी कर लिया तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा. यस सर, यही है। मैं तो पहले आपसे जिस दिन से आप बोल रहे थे वो आई एम जस्ट उस पे बोल रहा हूँ कि वही है, एक ही इसमें पैसा कमा सकते। आप यस परफेक्ट बोल रहे हैं सर, यही है यस, होली ग्रेल। वही कुछ नहीं बाकी। और कुछ नहीं. एग्जैक्टली, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट और रीड. 10 बार भी, हाँ बराबर, वही सर होल्ड नहीं कर सक रहे हैं ना, वही तो इश्यू होता है। सर वही सिखाओ सर हमको, बस मेन चीज वही है। रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे ना सर आपको, तो आपको तो मैं तो सर मैम जस्ट सेइंग, हाँ ऐसा कुछ नहीं, मेरा एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं 20 30 40 50 पॉइंट तो हर रोज मिला सकता हूँ, लेकिन जब जाएगा वही कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, दैट इज द ओनली इश्यू। वो जब आएगा तो वही मेन है चीज, नहीं तो एवरीडे मैं मेरा ये सेटअप के हिसाब से देख रहा हूँ 20 30 40 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तो मिलते ही है सर मेरे को। यस. जब मैं क्यों डर रहा हूँ कि जब मेरा अगेंस्ट जाएगा, अगेंस्ट भी जा सकता है ना सर, सर वो वो अगेंस्ट फिक्स इसलिए जा रहा है सर्टेनिटी क्योंकि आप थोड़ी है ना। अगेंस्ट इसलिए जा रहे हैं सर क्योंकि आप हर रोज ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो. आप ट्रेड्स लिमिट कर हाँ लो, हर रोज कर आप रहा हूँ सर। आपको खुद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दिखने लगेंगे. मतलब अगर हम लोग हर रोज हाँ करते हैं वही, तो वो हर रोज करने के चक्कर में वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंड व्हिच वन इज अ लो वन. हाँ बराबर है सर, वही हो रहा है, राइट राइट राइट।
और एक सर समझो एक दो गलत हो गया तो फिर जो आता है ट्रेड अपने हिसाब से वो नहीं ले पा यस सकते, यस ऐसा भी होता है। यस। कौन पूछ रहा था? सर मैंने आपको या टेलीग्राम सर सर या मैंने आपको टेलीग्राम पर अपना पोजीशन भेज दिया, आप चेक कर लीजिए, चार्ट भेज रखा है मैंने। और ओके। उसका आपको टारगेट एक बार देख लीजिए, आपको क्या सही लग रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली ऑप्शन चार्ट पे अपने टारगेट बनाता हूँ, जो जिसका क्राइटेरिया या तो स्विंग होता है या तो गैप फिलिंग होता है। तो इस बार मेरा बेसिकली गैप फिलिंग है, एक बार चेक कर लीजिएगा बेसिकली अगर आपका आपको सही लगे। 340 पॉइंट्स अवे है, एंड देन क्योंकि आप इन द मनी हो, फर्दर 340 पॉइंट फॉल विल गिव यू योर टारगेट। तो ओके सर। 340 पॉइंट्स फर्दर मतलब 55 800 के आसपास मिल जाएगा आपको। मंडे को ही मिल जाएगा मेरे ख्याल से, मंडे और ट्यूसडे। ओके सर। और सर ये भी पूछना आता, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि उसमें बैठे रहना होता है, तो यस फिर अब जैसे मैं, आपको पता है मैं अपने अच्छे पोजीशन पे बैठ चुका हूँ, और यानी पहले 7-8 दिन पहले से ही मैंने अपने पोजीशन पे बैठा हुआ था इसी मूव के लिए। तो यस। अब इसको ये जो टारगेट है, हमें टारगेट पे रहना चाहिए या फिर इससे और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं कि और ऊपर जा सकता है, ये कैसे डिसाइड करूँ सर मैं? सर अगर अभी आपने जो क्वांटिटी दे रखा है इस ट्रेड के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पूरा होल्ड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मतलब जब भी स्विंग लेता है वो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन आप बैठे रहो। अगर आपको और लगता है ये भी कि बहुत दिनों से मैं जी लॉस में हूँ और आपको थोड़ा बहुत बुक करना है, देन बुक 60 to 70% एंड होल्ड द रेस्ट। ये भी कर सकता हूँ, जैसे दो क्वांटिटी या तीन चार क्वांटिटी ले रखी, आधी क्वांटिटी ले ली, आधी क्वांटिटी छोड़ दी मैंने इसके एग्जैक्टली। लिए कि चलो अब वही जितना ऊपर आगे वही जाएगा देख लेते हैं। वही। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मनीष जी, आपने हाथ उठा रखा है, प्लीज। जी सर, आपने earlier you said about the VIX spike as a guide to the amount your strike will decay, हम्म। and if this spike is a bit too much, then and you're in the ATM, then you know that decay will not happen. नॉट मच, यस। So can you just give a guide on the amount of VIX spike that we must be lookout on either intraday or as a absolute level? Sir, anything above 15, you will see option prices swinging very rapidly. तो 15 के ऊपर जब भी जा रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इन द मनी, बिकॉज अगर आपके डायरेक्शन के अलग भी जाएगा तो भी विक्स डीके विल हेल्प यू इन द ओवरऑल प्राइस ऑप्शन डीके। तो 15 इज यूजुअली दैट लेवल। 15 के ऊपर अच्छा एक्टिविटी होता है, एनीथिंग बिलो 15 वो डीके वीके कम हो जाता है। Right. Thank you. Thank you. एंड अभी तो हम लोग 14 15 महीने वाले लेवल पे है, 14 15 मंथ लो विक्स। मतलब गजब ही है। एक तो बोलते इतना मैनिपुलेशन है और विक्स ही नहीं होता है अपने इसमें। Right, this low VIX is making it very difficult for the option buyers also to make money. या मतलब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है ना सर, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। Hi, sir. हाय हाय, हाउ आर यू? वन लॉन्ग टाइम। Fine, sir. Actually, I was outside, so I could not join in the beginning. So, ओके joined just a while. ओके। फॉर But ऑल I think you दोस। have discussed regarding reading those FIA data on Sensibull, right? या Okay, so I will watch the video once you upload on YouTube. ओके। फॉर ऑल दोस हु आर वंडरिंग हु इज मोहन, इज माय एक्स कलीग फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी। I saw a comment briefly. Can you please speak up, whoever posted that comment? I'm not able to find. I got it. So BHG आपने बोला, how do we know if option price are high as buyer? VIX anything above 15 buyer के लिए घपला है, because VIX can crash anytime and you end up losing most of the premium that you bought it for. So for me 15 is a threshold. If it is below 15, even if you buy and hold for a couple of days, decay will not hit you that much. Above 15, if you buy and hold for a couple of days, you will end up losing 20 25% of your option premiums. Vinod Reddy is asking, sir, may I know indicators which can be good for scalping, especially for options index Nifty? Sir, indicators, Vinod ji, I mean, I have tried using many of them, but unfortunately, have never able to harness fully. For scalping, the indicators that I use is only these ones. So basically, my default setting will always have this RSI stochastics at the bottom,
which will basically tell you the sentiment the index as a whole is following for that particular moment. So whenever there is if any wide gap, let's say here between blue and red line of RSI stochastics, indicates it is a very good time to scalp for one or two candles. Like here, if you see this move big, that is because of this wide gap between red and blue. So if at all you had decided to scalp here, you would have easily got this move. So for me, scalping I usually used to do with this particular indicator, and apart from that, I'll use CPR in TradingView. That is basically to tell me if market is going to be volatile or it is trading at a support or resistance. So these are the only two indicators I used to follow, but now not much. Last time I was sharing my white screen, so charts were I think very very they were not very clear. I think this time it would have been यस better, सर, isn't it? यस सर, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप गूगल मीट पे शिफ्ट हो जाइए, ज़्यादा बेटर रहता है। और Yeah. यहाँ And पर even टेलीग्राम पे last प्रॉब्लम time पड़ती है। last time it was white screen. This time it is not the white screen. ये मेरा लैपटॉप स्क्रीन है. अगर white screen कर ओह, दूंगा तो here also I think we'll face the same problem. Very small हाँ, charts, nothing visible. या पर ऑडियो और वीडियो बहुत अच्छी आ रही है पहले के मुकाबले से। Okay, okay. आई थिंक लैपटॉप पे ही लेना चाहिए अगले सेशंस की। Yeah, I'll maintain this laptop. Yes. सर सीपीआर की जो थ्योरी है कि टाइट सीपीआर जनरली इंडिकेट्स की मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तो आप Yes. वो यूज करते हो नहीं करते? नहीं पहले कहता था अभी नहीं अभी only price action chart only day closing and how is it looking on the chart. ठीक है सर। बेसिकली आप ये बोल रहे थे ना ये वाला रेंज टाइट है तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रेंड विच इट ट्रेंड सॉर्ट ऑफ ट्रेंडेड एक्चुअली ऐसे आप बोल रहे हो ना कि ये वाला रेंज टाइट हाँ हाँ सर, अच्छा काम करता है ये वाला रेंज टाइट। ऑप्शन के चार्ट पे भी अगर लगाएंगे सर, कॉल पुट पे हर रोज सुबह लगा के देखता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करता है कि कॉल या पुट क्या चल सकता है उस दिन। सर आप जो इंट्राडे आप बोल रहे हैं वो मीन्स इफ आई एम गेटिंग यू राइट क्या आप वो डे कैंडल पे ही पहले दिन आप फिक्स मीन्स डिसाइड करते हैं कि ट्रेड क्या लेना है, इज इट राइट सर? यस 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 मेरा यूजुअली बिफोर मार्केट ओपनिंग ही मेरा एक प्लान होता है आई डोंट डेविएट फ्रॉम दैट प्लान मच। अच्छा मीन्स ऑलरेडी यू आर क्लियर इन योर माइंड कि क्या ऐसा ही हुआ तो ऐसा ट्रेड लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं, ये फिक्स ही है सर आपका? यस यस फिक्स। और वो भी डे डे के कैंडल के हिसाब से, यस डेली कैंडल? यस यस ओके ओके। क्योंकि सर अभी कल के लिए मैं बोलता हूँ आपको अभी क्लियर चार्ट पे दिख रहा है कि इट इज अ डाउन ट्रेंड। नाउ लेट्स से मार्केट खुल गया यहाँ पे एंड फर्स्ट कैंडल ही ऊपर जा रहा है that is basically the opposite of what we thought on daily charts. We are expecting a down move, but it is planning to go up. So जब ऐसा होता है तो I'll usually wait for like an hour or two to confirm that that up move is actually correct. And if at all it is going sideways and slightly up, I don't trade. I want momentum to trade. क्योंकि जो भी मार्केट को हिलाना चाहता है and if he wants a big move, he'll not wait around for people like us to enter. He will do it very quickly. So for me, momentum is a big factor to trade. Without momentum, I don't usually trade. यस सर, थैंक यू। तो लास्ट वीक सबके लिए अच्छा था खराब था ओवर ट्रेडिंग हो गया? मेरा तो अच्छा ही था सर, मैं तो बोला ना सर आपको, मेरे को तो 10-20 पॉइंट आराम से मिल ही जाते हैं, लेकिन जब मैं अभी ज्यादा डर रहा हूँ कि जब स्टॉप लॉस होता है तो मैं स्टॉप लॉस एक्चुअली पहले कभी बोलने में अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कभी लगाता है नहीं सिस्टम में सर मैं। तो कभी कभी फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, एक्चुअली 50 पॉइंट का मेरे हिसाब से तो मोस्टली नहीं होता है वो, एज पर माय सिस्टम जो है उसको वो क्या बॉटम में बाय और टॉप में सेल का ही सिस्टम है, मीन्स नॉट एग्जैक्टली आई एम मीन्स ऐसा मत ले लो कि बॉटम किसको पता नहीं है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मेरा सिस्टम जो है वो हार्डली मैंने 10-15 साल का बैक टेस्टिंग किया है, तो 50 पॉइंट का निफ्टी में आजकल स्टॉप लॉस उठाना बहुत कम हो, रेयरली होता है।
Yes. लेकिन जब होता है फिर अपन गिविंग अपन मार्केट को यू आर गिविंग 50 पॉइंट्स और Yes. कमारे 5-10 पॉइंट, तो वही हिसाब मेरे का इश्यू हो रहा है कि आई कैन नॉट होल्ड माई विनर्स। तो Yes. दिख रहा है मेरे को अभी फ्राइडे को सर, मैंने आप देखो मेरा ट्रेड, मैंने एग्जैक्टली प्रॉपर मीन्स वो उसका फुट जो लिया मैंने बाय किया था, Yeah. आपके हिसाब से तो मैं कल के अभी सेल भी कर रहा हूँ, वो कुछ 25-200 का पुट या 24 कुछ 270 रुपीज में, दैट वाज 168 वाज द बॉटम। Hmm. लेकिन मेरे को किधर जाना है तो मैंने 10 पॉइंट में कवर कर दिया। वो सर 120 पॉइंट गया है सर वो पुट। Oh shit. यही इश्यू हो रहा है सर। नहीं तो बेसिकली वही, मैं तो आपको 10 बार वही बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा सिखाओ कि इवन भाई होल्ड करो, बस उतना ही है। सर और आप तो ट्रेड तब कर लो, जितना जैसा आप, मैं बोल रहा हूँ, डेली आप ट्रेड करोगे नहीं आएगा होल्डिंग, पक्का है। हाँ वो बिकॉज तो ठीक है जी, डेली तो डेली आप करोगे, आपको बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि प्रॉफिट आया निकलो कल देखते हैं, प्रॉफिट आया निकलो कल देखते हैं, वैसा नहीं करना ओके ओके नहीं तो है। हेमंत ठीक है, भाई एक फिर काम कर वापस सकते हो, हाँ। ब्रेक इवन पे ऑर्डर लगा के छोड़ दे सकते हो कि अगर वो प्रॉफिट में आया तो उसमें से कभी ना कभी तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लॉस। वो टेक्निकल, हाँ नहीं मैं तो जिंदगी में वही बोल रहा हूँ ना, मैंने आप जैसा करते हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लगाओ, आधा इधर करो। मैं कभी जिंदगी में जब लिया कितना पहले एक ही बार क्वांटिटी लेता था और एक ही बार छोड़ता हूँ। कभी जिंदगी में आधा छोड़ा है आधा नहीं किया, इसके लिए वो मेरे को मे बी दैट इश्यू मस्ट बी विथ मी, क्योंकि कभी किया नहीं है। अभी नए नए जैसे सर सिखाएंगे वैसा सीखेंगे और क्या। जी सर, क्योंकि सर दिख रहा है सामने, आप बोल रहे हैं कि बस होल्डिंग का ही मेन इश्यू है और उसके वजह से प्रॉफिटेबल आप उसी वजह से हो ना। यस। नहीं तो आप जो लिया ट्रेड और 10-20 पॉइंट में निकल गए तो आपका कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो जाएंगे। नहीं होगा सर, नॉट पॉसिबल। क्यों- मैं तो हर हर हफ्ते आप देखेंगे तो 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में ही रहते हैं, लेकिन जब दो जाता है तो वो इश्यू हो जाता है कि 50-50 पॉइंट दिए तो सब 100 पॉइंट जाता है और मिला है कितना 70-80, ऐसा हो रहा है। यस। पवन जी बोलिए। So how you decide the stop loss for option buying? Is it your level break or some points you are making in the system? No, sir. I don't decide option prices per se. My stop loss is always decided on chart, the way candles are closing. Like जैसे फ्राइडे का ट्रेड के लिए अगर आप एग्जांपल लोगे तो my entry was at this particular point, so 25,070 odds, and my stop loss was here because I could see a swing. So irrespective of whether my option price is 30, 40, or 50 points above or below where from wherever I bought, if at all there is any 5-minute candle closing above this price, I'll exit. So that is how I put my Okay. stop losses. I don't put stop losses on options. क्योंकि ऑप्शन इतने volatile होते हैं, it will take away your stop loss for sure. Yeah, the system में आप नहीं डाल रहे हैं, नहीं right? डालता हूँ, नहीं डालता हूँ. And my stop loss is usually defined by uh, this spot chart, and that too closing above a particular level that I have in mind. Okay. Okay. सो So सर लेकिन क्लोज क्लोज के वक्त तो कितनी भी बड़ी कैंडल आ सकती है ना, फिर कैसे कैसे ट्रेड करते हैं? तो लेकिन वही है ना सर, आई मीन ऑल द कैंडल्स विल नॉट बी अ मोमेंटम कैंडल. अगर आराम आराम से आ रहा है, इधर ही होवर कर रहा है, देन आई डोंट एग्जिट, यूजुअली टिल क्लोज. अगर ऐसा बड़ा मोमेंटम वाला कैंडल आ रहा है, देन आई विल एग्जिट, आई विल नॉट वेट टिल क्लोज. ओके, वो गॉट आपको इट, पता चल जाता है, द वे इट ओपन एंड द वे इट इज बिहेविंग, आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज अ मोमेंटम कैंडल और इट इज अ स्लो कैंडल. गॉट इट। एंड लेकिन एग्जिट के लिए आप स्पॉट का चार्ट देखते हो, करेक्ट? Exit spot chart, yes. हाँ, Like थैंक in Friday's trade, this was my stop loss, 25.86. Anything यू। above ओके that, I was going to quit. ओके। सर यू टोल्ड कि मोमेंटम बेस पे आप करते हैं, ट्रेड ज्यादा नहीं लेते हैं, जो Hmm. मोमेंटम के अनुसार लेते हैं, तो व्हाट हाउ यू डिसाइड द मोमेंटम बेस? इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन break or something else you were taking into No, sir, account? pure price action. No indicators, no trend lines. हाँ, trend lines मतलब yes, ये वाला. जैसे अब मैंने आपको बोला था कि flag break किया तो that was the trend line that you rightly said, हाँ. like this particular point. Okay. Okay. And अभी एक clear downtrend में है. So whatever happens tomorrow is probably a continuation of the downtrend. तो कल भी जैसे PDL break होता है, again trade. कुछ और देखना ही नहीं है. फ्राइडे का लो टूटा, अगेन ट्रेड. एंड फ्राइडे का लो Okay. टूटा तो जबरदस्त गिरेगा बिकॉज इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ टू मेनी थिंग्स. लाइक यहाँ पे 50 EMA है, प्रीवियस सपोर्ट्स है,
You are breaking 25,000 decisively. Actually, on options chart, if you see 25,000 is not yet broken. 25,000 वाले अभी भी बैठे हुए हैं PE पे. If it would have broken, it should have broken very badly. अभी तक टूटा वो नहीं है शॉर्ट 25,000. कवरिंग Still, people are waiting to see what will happen. ओके सर जो आपने फ्राइडे को ट्रेड लिया तो हम्म? आपने ऑप्शन बाइंग किया था ना नहीं सेलिंग सर. वो जो सेलिंग किया मैंने ओके ग्रुप में वो हेज वाला भी एक इमेज डाला था, देखा आपने? बेसिकली ओके 2 हेज माइनस परसेंटेजेस. वो मेरा एक नॉर्मल खुद का इंडिकेटर है कि whenever I enter a trade, if the hedge is decaying faster than your spot, that means it is going to move in your direction. तो मैंने टेलीग्राम में वो डाला भी था. राइट राइट no, suppose for hedging, no, on the day of expiry, I think there is no concession in margin. No. It is there, but not like usual day. Hedge आप expiry day पे करोगे, it will reduce your margin requirement, but not like particular day. वो ELM का जो चक्कर है, expiry link, extra loss margin or something, उसकी वजह से. By the way, that is also one of the requirements which broker asked Sebi. Broker ने बोला है कि वो ELM extra margin हटाओ. If that is the case, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, because even with this amount, I was not able to take good volumes on expiry day. वो अच्छा हो जाएगा. अगर आपने 5600 का लिया था 5400 समथिंग 3600 लिया था उसमें आपने एक बार में ट्रेड 36,000. 36,000 सॉरी तो उधर स्लिपेज आती है आप में नहीं, 36,000 was completely not selling. 18,000 was selling and 18,000 was buying. हाँ तो 18,000 में स्लिपेज आती है या फिर नहीं आती है नहीं इतना नहीं. आप बास्केट क्रिएट करके कर दोगे तो probably 1.5 rupees, but not much. ओके ओके सर थैंक यू Okay, sir. Thank you for today's session. It's very helpful. So if at all किसी और को नहीं है तो shall we close it today, or somebody else who Sounds good. wants? Yeah. Okay. All the best for tomorrow, everyone, and to you also, sir. Okay. Thank you. Thanks for attending. Bye bye. Thank you. Bye.